Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good afternoon, students. We'll be seeing the remaining part. Last time, in the last lecture, I have talked about the important aspect of your memory organization, in which we have seen internal memory size, external memory size. Okay, if your 8051 wants to access your external ROM, internal ROM, then external RAM, internal RAM, then what are the different registers which we want to use? Okay, now with the same understanding we will see the remaining part. Is my screen visible now? Yes, sir. Okay, so to explain you that particular figure, let's directly go to the, yes. So I have talk about the last portion. I have talked about if I have to access my internal ROM. Okay, now you may ask me question, why do we require ROM? So sometimes the ROM is required if the program size is greater. Okay, so if the program size is not get fitted, or cannot be complete into a 4 key of ROM, then we have a two provision. One provision that we can have the external ROM with the size of 60K, else we can have an external ROM with the full size of 64K. Okay, so I have given all the reasons. I have explained you in all the possible ways. Okay, and if you have to choose on chip ROM with external ROM, then you have to use the pin which is called as EA bar pin. Okay, so if you connect this EA bar pin, if you can see here, it is written here, if EA bar pin is connected to VCC or plus 5 volt, the 8051 will access first 4K bytes, that is from 0000 to 0FFF from internal ROM, and any address above 0FFF, okay, will be accessed from external ROM. So this is the scenario. This is the scenario. If EA bar is connected to ground, then only external ROM memory from 000 to FFFF H will be accessed by the 8051. So in that case, this is the scenario. So both the scenarios I have explained you. Now here we need to understand, in this you have an important role of DPTR, data pointer. Okay, data pointer, because data pointer size is of 16, it is going to point to the data of the memory. Okay, if you remember मैंने बताया था, let me show you once again, because these are the minute details which will always be confusing you, so don't get confused. So your concept should be clear, there should be no confusion at all. So while explaining you DPTR, and in association with the memory, I have already told you about the concept of DPTR and where we can use. Yes, it is here clearly mentioned. DPTR is used to point the data byte in external RAM, internal ROM, external ROM. Okay. So let me give an example here itself. If I'm using an instruction move DPTR, comma hash 1234, it means your DPTR will have the value of 1234. 1234. It also means that 34 is in DPL and 12 is in DPH. Data pointer higher order, data pointer lower order. So when your DPTR is 1234, it means it will be pointing either to the external ROM or to the internal ROM or to the external ROM. ओके, विद द एड्रेस ऑफ 1234. तो एक एक सपोज ये लोकेशंस है मेमोरी के, तो यहाँ पे कहीं 1234 रहेगा, तो ये मेमोरी एड्रेस है 1234 विच इज पॉइंटेड बाय द DPTR, which is pointed by the DPTR. Is it clear to everyone? The concept of DPTR and how it is associated with external RAM, internal ROM, external ROM. Is it clear to everyone? The concept of DPTR and the memory. Am I audible? Yes, sir. So is it clear?
Huh. So with this understanding, we'll proceed further. Yes, now this is important. External memory organization. I want everyone to write down this external memory organization. This is important. This will again create an confusion. Okay. So this concept is will be helpful for you to understand how do you connect your external RAM, how do you connect your with your external ROM, and what are the supporting instructions which will help you out to access the external memory. It may be ROM or RAM. Okay, it may be ROM or RAM. Now, when you talk about the, I think you have written the heading as external memory organization. So we are going to understand the concept by using this figure, by using this figure. Okay. Now, I want everyone to pay attention. This is very important concept. Okay. अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी. So try to understand the concept. Now, when you talk about the external memory organization, okay, you already know that whenever I am using my this one, your program counter. Now your program counter is associated. Now if I ask you a general question, I want answer from you. If I ask you the general question whether this program counter is associated with the RAM or it is associated with the ROM, what is your answer? Program counter या फिर PC, it is associated with RAM or ROM? Program counter PC, are you there? Rom. Yes, it is associated with ROM. Yes. So when you talk about the program counter, it is associated with the ROM only. The simple reason being that program counter का definition ही ये बताता है कि program counter will hold the address of the next instruction to be executed, and the execution of the instruction will be or the your instruction opcode or your instruction code is always, it always resides in your ROM. So program counter वो address बताता है. So your program counter is associated with the ROM. Okay. Now if you see here in this figure, all of you pay attention. You have an 8051. हम बाहर से क्या लगा रहे, एक्सटर्नल रैम लगा रहे. कैन यू सी दिस इज एन एक्सटर्नल रैम which is also called as external data memory. You have connected external ROM, that is also called as external program memory. You know the size of your program counter is 16 bit. It is of 16 bit. You also know the size of DPTR is also 16 bit. So if the program counter size is of 16 bit, and if your DPTR size is of 16 bit, okay, then if I have to connect external RAM, what should be the maximum size? And if I have to connect external ROM, what should be the maximum size? Yes, 2 raised to 16 is equals to 64. Yes. So external RAM I can connect at the maximum 64K, as well as I can connect the external ROM with the 64K. So that is shown here. Can you see here 64K of external RAM and 64K of external ROM? Can you see the address 000H ending with FFFF? Here also the starting address is 000H and the ending address is FFFH. So here you have to understand that you can connect external RAM and external ROM of each of the size of 64K with the starting address of 000 and the ending address of FFFF. Okay, so that shows the clarity here in this figure. Now something more on this. Something more on this.
Now the question is, can you see the question here? I want everyone to see here now. The question says, how processor will decide which address space, either RAM or ROM, to use for a data transfer. प्रोसेसर को कैसा पता चलेगा द एड्रेस विच आई एम यूजिंग वो एड्रेस रैम का है या फिर वो एड्रेस रोम का है. ओके, सपोज एक एड्रेस मैंने लिखा 1234H, 1234H. तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है 8051, उसको कैसा पता चलेगा कि 1234 इज ऑफ द एक्सटर्नल रैम या फिर 1234 इज ऑफ द एक्सटर्नल रोम, क्योंकि 1234 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 1234 यहाँ पे भी प्रेजेंट है. सो हाउ your 8051 will come to know this? That is the question. So question says, how processor will decide which address space, RAM or ROM to use for a data transfer. अगर मुझे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो हाउ दैट इज अचीव्ड और हाउ दैट 1234 इज आइडेंटिफाइड, वेदर दैट 1234 इज एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल रैम या फिर 1234 इज एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल रोम. सो फॉर दैट वी हैव अ dedicated yes, we have a dedicated instruction. All of you pay attention. We have a dedicated instructions. Pay attention. These instructions we are going to see in detail when we will be talking about the instruction sets. Okay. So please try to understand just an introduction of this. So you have understood the question. Once you have understood the question, we will be able to understand the solution now. Okay, see what is the answer. It depends upon the type of instruction being executed. So it only depends upon what type of instruction you use. So as far as ROM is concerned, okay, that is a code ROM movement instruction. Agar koi instruction hai that is related with the data transfer, my first question is, do we have the right do we have the provision to read the data from the ROM, or do we have the provision to write the data in the ROM, or we have both? Read only. So we have the provision to read only. So if I have a provision to read only, then in that case your instruction would be, when you are accessing the ROM, तो एक एक बात तो पक्की है कि मैं रोम से सिर्फ रीड कर सकता हूँ, उसमें नहीं लिख सकता हूँ. तो जब अगर मुझे रीड करना है, सो यू हैव दीज टू इंस्ट्रक्शंस. यू कैन यूज दीज टू इंस्ट्रक्शंस if you want to read the data from the ROM. Which are these instructions? The first instruction is move C A comma at the rate of A plus dptr. Now pay attention, all of you. मूव इंस्ट्रक्शन हमने पहले ही पढ़ा था. जब मैंने प्रैक्टिकल्स लिया था तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था. मूव ए कॉमा हैश 20H. ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, आपका जो 20 जो नंबर है दैट इज मूव्ड इनटू ए. तो सो कैन आई से इन जनरल इट इज मूव सोर्स कॉमा, सॉरी, not source, it is move destination comma source. Can I say move destination comma source? Because यहाँ पे जो है डेटा that will be move into the destination. तो आप जो पहले कॉमा के जो पहले लिखोगे, वो रहेगा डेस्टिनेशन, और कॉमा के बाद जो लिखोगे वो रहेगा सोर्स. तो आपने हैश लिखा. व्हाट डज हैश मीन्स? हैश मीन्स इट इज द इमीडिएट डेटा. इट इज नॉट द एड्रेस. It is the immediate data. If I have to show the address, it will be shown by at the rate. So here it is the data which is I am moving into A. Similarly, if I have written an instruction move C A comma at the rate of A plus dptr, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है समझो. सबसे पहली बात है, मैंने यहाँ पे लिखा है मूव, यहाँ पे मैंने लिखा है मूव सी. सो मूव सी
इंस्ट्रक्शन से ये पता चलता है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद द कोड मेमोरी. C stands for code memory. Code memory means your ROM. Code memory means your ROM. So move C is associated with the code memory. So ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ मूव नहीं है, MOV नहीं है, दिस इज MOVC. So it shows that this instruction is associated with the ROM or code memory. Then this is my source and this is my destination. This is my source and this is my destination. Even there is a at the rate. So ए में ए रजिस्टर में कुछ कंटेंट है, आई डू नॉट नो क्या कंटेंट है. डीपीटीआर में कुछ कंटेंट है, डीपीटीआर में कुछ कंटेंट है, वो भी मुझे नहीं पता क्या है. बट व्हेन आई ऐड ए प्लस डीपीटीआर, मैं जब दोनों को ऐड करता हूं तो जो कुछ नंबर आता है, सपोज नंबर आता है 2336, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग 2336H. आफ्टर एडिंग ए प्लस डीपीटीआर आई एम गेटिंग 2336H. सो हियर 2336H, ये एड्रेस लोकेशन, आपके रोम का जो एड्रेस लोकेशन है 2336, ये एड्रेस में जो कुछ है that will be moved into accumulator A. That will be moved into accumulator A. Again I am repeating, please pay attention. My question is, how do you access your ROM or external ROM? For that you have an instruction that is move C. C stands for code memory. Even this is a data transfer instruction. As here you have seen, you have written C, it means your instruction is associated with the code memory. So here at the rate of a plus dptr, जो भी कुछ वैल्यू आती है, सपोज इट कम्स टू बी 2336, यहाँ पे एट द रेट है, इसका मतलब एड्रेस है. 2336 इज नॉट द इमीडिएट डेटा बट इट इज द एड्रेस. और ये जो एक्सटर्नल रॉम है, वो एक्सटर्नल रॉम में ये जो मेमोरी एड्रेस है 2336, और ये एड्रेस में जो कुछ डेटा है, it can be data, it can be instruction opcode. So that data or instruction opcode will be moved into accumulator A. That will be moved into accumulator A. Have you understood this instruction move C A comma at the rate of A plus dptr? Any question, any doubt so far? Any question, any query so far? No, sir. Okay. So here we have talked about one instruction which is associated with the external ROM. Second instruction is this: move C A comma at the rate of A plus PC. A plus PC, यही भी वही काम करता है. मूव सी, मूव सी आ गया तो पता चल गया कि एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल रॉम. ए कॉमा एट द रेट ए प्लस पीसी. आपको पता है डीपीटीआर भी मेरा 16 बिट का है, मेरा पीसी भी मेरा 16 बिट का है. तो जो कुछ पीसी का वैल्यू प्लस ए का वैल्यू ऐड करने के बाद जो भी कुछ आता है, दैट इज द एड्रेस. बिकॉज यहाँ पे लिखा है एट द रेट, दैट इज नॉट द इमीडिएट डेटा. और वो एड्रेस पे जो कुछ डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन ऑपकोड है एक्सटर्नल रॉम में, दैट विल बी मूव इनटू एक्यूमुलेटर ए. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Now these are the two instructions which can be used for the data transfer for the external ROM. And second important thing, you will not see anything like this. You will not see anything like this. Move C. Yes, you will not see anything like this. Can any one of you tell me why not? Destination is always accumulated. Yes, destination is always accumulator. Something more on that? Something more? Can you comment? मूव सी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट द रेट ऑफ
A plus dptr comma A. Yes, as simple as it is. The DPTR is of 16 bits. हाँ. Letter is of 8 bits. नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे एट द रेट है, इसका मतलब ए का जो भी कुछ कंटेंट है, ए प्लस डीपीटीआर ऐड होने के बाद जो भी कुछ नंबर आता है, दैट नंबर इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द एक्सटर्नल रॉम, और वो एड्रेस पे. उधर उधर सी लिखा है, so that means रॉम. हाँ. रॉम हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर. दैट मीन्स अगर ये ऐसा इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब हम रॉम में लिख रहे हैं, हम रॉम में लिख रहे हैं, तो रॉम में हम नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज रीड ओनली मेमोरी. यू आर राइट. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. सो you cannot write down in the ROM, you can just read from the ROM. Okay, so that is the meaning in this. Okay, so we have seen two instructions. So these are the only two instructions which are available to access your external ROM. To access your external ROM. Now we will see the instructions which are there to access your external RAM. To access your external RAM. So see the instruction. The instructions are the instructions are move x a comma at the rate of dptr. So you have understood, in the RAM I can read, I can write, I can read, I can write. So can any one of you tell me move x? See here, move x आ गया, x आ गया, इसका मतलब x stands for external RAM. X stands for external RAM. There is no C, this is X. So move X जब हम लिखते हैं तो तब तुरंत तब समझ में आता है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक्सटर्नल रैम में. डेटा ट्रांसफर हो रहा है या फिर डेटा एक्सटर्नल रैम से लिया जा रहा है, बिकॉज इट इज एक्स, बिकॉज इट इज एक्स. और सिर्फ मैं मूव लिखता हूं, इसका क्या मतलब है? सिर्फ मैं अगर मूव लिखता हूं, इसका क्या मतलब है? Internal data transfer. Very good, very good. The data getting transferred from the internal RAM. The data getting transferred in the internal RAM. Internal RAM से या फिर internal RAM को. Okay. So move is for internal RAM. Move X is for external RAM. Okay. So the instruction is move X a comma at the rate of dptr. At the rate of dptr. At the rate of dptr. Okay. Now here one important thing, that move x. Now dptr में जो कुछ है, that is taken as the address because at the rate है. Okay. dptr will be taken as the address. Sorry, dptr में जो कुछ है that will be taken as an address, और वो एड्रेस में जो कुछ है that will be moved into accumulator. यानी ये जो आपका जो एक्सटर्नल रैम है, एक्सटर्नल रैम का जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस विल बी पॉइंटेड बाय dptr, और वो एड्रेस पे जो कुछ डेटा है दैट विल बी मूव इनटू द एक्यूमुलेटर. दैट इज द मीनिंग ऑफ मूव एक्स ए कॉमा dptr. सिमिलरली मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट ऑफ rp. मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट ऑफ rp. नाउ हियर rp मीन्स यू कैन टेक एनी ऑफ द रजिस्टर. आपके पास R0 से लेके R7 तक है, सो दैट कैन बी टेकन एज अ रजिस्टर, और वो रजिस्टर में आप कुछ रखो, और रजिस्टर के पहले अगर आपने मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट आर, सपोज मैंने लिखा R6, तो R6 में जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो नंबर विल बी टेकन एज एन एड्रेस बिकॉज हियर एट द रेट इज देयर, और वो एक्सटर्नल मेमोरी का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस में से डेटा आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटर. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड इंस्ट्रक्शन. थर्ड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द थर्ड इंस्ट्रक्शन डूइंग? मूव एक्स एट द रेट ऑफ dptr कॉमा ए. नाउ सिंपल, अब ये तो आना चाहिए आप लोगों को, मूव एक्स एट द रेट ऑफ dptr कॉमा ए. ए में जो है वो रैम में जाएगा. यस, ए में जो है वो रैम में जाएगा, एक्सटर्नल रैम में, एक्सटर्नल रैम में जाएगा. ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ एक्स, और
वो एक्सटर्नल रैम के कौन से एड्रेस पे जा रहा है वो पता चलेगा डीपीटीआर में जो कुछ वैल्यू है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला भी वही है। ए में जो कुछ डेटा है दैट विल बी मूव्ड इनटू द एक्सटर्नल रैम and the address of that external RAM is pointed by the register RP, or RP is in general, you can take register R0 to R7. Is it clear? Is it clear? Yes. Now we will be drawing some conclusions. The conclusions are, pay attention, the conclusion are, the first conclusion is that uh, your PC will be only associated with the ROM. Can you see there is no PC written? So PC will be not associated with the RAM. Okay. Second conclusion we can draw that we can only read from the ROM, but we can write as well as read from the RAM. So, for reading the instruction from the RAM, we have these two dedicated instructions, and to write down into the external RAM, we have these two dedicated instructions. Can I comment this? Can I comment this? Yes. So this is for reading the RAM, and this is for writing the RAM. This is for writing the RAM. Is it clear to everyone now? Is it clear to everyone now? Okay. So these are the important things, very, very important things. So you have understood what is move, what is move X, what is move C, and the size of the memory of external RAM and external ROM, and DPTR is used to. One more conclusion. One more conclusion. You can see the DPTR here. You can see the DPTR here. It means you can access your external ROM, you can access your external RAM by using the DPTR. By using the DPTR. By using the DPTR. So this clear shows that DPTR pointer can be used to access your external ROM as well as external RAM. Am I right? Okay. Now I think mm, yes. तो हाँ, क्वेश्चन मेरा था। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा क्या था कि प्रोसेसर को कैसा पता चलेगा? आप कोई मुझे कमेंट करके बता, अभी कोई मुझे बता सकता है कि प्रोसेसर को कैसा पता चलेगा कि वेदर प्रोसेसर वांट्स टू एक्सेस फ्रॉम द रॉम और रैम? हाँ, कोड। कोड, या फिर आप बोल सकते हो बाय यूजिंग द, हाँ, वेरी गुड, यस, बाय यूजिंग मूव सी या फिर बाय यूजिंग मूव एक्स। बराबर है। मूव सी की जब बात करूंगा तो यही पिक्चर में आएगा, मूव एक्स की जब बात करूंगा तो यही पिक्चर में आएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके। सो आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर। प्लीज आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी doubt. Okay, so we will more proceed further. Already I have shared this ebook with you. Please go through some type of a discussion. These are discussions are very important. Okay, so please go on this. Now I need to proceed further. Before I proceed, uh, okay, can we have these objective questions before I proceed? Because after this I will be taking your pin configuration, pin diagram. So let's have a objective type questions. I won't answer. Anyone can answer. Okay. So number one, the 8051 stack can be defined in internal code memory, external data memory, internal data memory, all of the above. Yes, your answer. 8051 stack can be defined in stack memory. I have talked about the stack memory and the stack pointer.
Yes, very good, very good. Internal data memory, very good. Next, in the 8051, data can be stored in code memory, internal RAM, stack memory, all of the above. All of the above. Code memory. The code memory will not be हाँ, required. कोड मेमोरी, यस, कोड मेमोरी में हम नहीं स्टोर कर सकते। इंटरनल रैम में कर सकते हैं एंड स्टैक मेमोरी में कर सकते हैं। तो ऑप्शन उन्होंने जो दिया है वो गलत है। आंसर शुड बी इंटरनल रैम एंड स्टैक मेमोरी। डू यू एग्री विद दिस? Sir, but we can use one option, no? हाँ हाँ, यस, ऑप्शन इज नहीं है, क्वेश्चन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। एक्चुअली ये दोनों होना चाहिए, तो आंसर शुड बी एटलीस्ट ए, सॉरी, बी एंड सी। बराबर है, बी एंड सी। ओके, क्या क्या? B and C, internal RAM, stack memory. Yes, yes, both are. Yes, that is also true. You are right. That is a good observation because आपका stack memory resides in the internal RAM. So instead of saying stack memory different and internal RAM, we can just say B. Yes, that is also fine. Yes, that is also fine. Yes. लेकिन अगर D में ऑप्शन रहेगा B and C, तो which one is more right? B and C. बराबर है ना? B and C? Yes. Okay. The next one. The program counter A stores the address of the instruction that is currently being executed, stores the next instruction to be executed, stores the address of the next instruction to be executed, stores the instruction that is being currently executed. Your answer. Some of you say C, some of you say C. नहीं, किसी ने बी भी बोला था शायद ना? Okay. So the right answer is the program counter stores the address of the next instruction to be executed. Yes, you are right. C is the right answer. C is the right answer. Next, in the 8051, SP is dash wide register and may be initialized to point anywhere in the dash. A 8 byte on chip 128 byte RAM, 8 bit on chip 256 byte RAM, 16 bit on chip 256 byte RAM, 8 bit on chip 128 byte RAM. Yes, this is more interesting now. Yes, I want answer from your side. This is easy. Sir, 8-bit on chip 128 byte RAM. Option D. D 8 bit on chip 128 byte RAM. Anyone with a different answer? The 8-bit on chip 256 byte RAM. The base is 256 byte. 256 byte RAM. माय डियर, आपका रैम का साइज इंटरनल कितना है? 128 है। और आपका एस एफ आर, हाँ, और आपका एस एफ आर 128 है। 128 हो गया 256। लेकिन हमारा जो स्टैक पॉइंटर जो पॉइंट करता है वो सिर्फ इंटरनल रैम पे पॉइंट करता है, और हमारा इंटरनल रैम की साइज है 128। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज डी, 8 बिट ऑन चिप 128 बाइट रैम। एम आई राइट? एवरीवन एग्रीज? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, आई कैन मोर गो टू द डिटेल, बट यू शुड नो दैट। Consider the remaining amount of क्लास, 128 byte RAM, sir. हाँ, चार, साढ़े चार, हाँ, जरा जल्दी निकल जाए। ठीक है, देखते हैं फिर वो बताते हैं। हाँ, यस, योर ऑप्शन, हाँ, हाँ मैम, यस, हाँ, क्या बोला था मैं? यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4? Sir, we should not consider the remaining 128 byte of RAM. नो नो नो, मैं आपको पहले बताया था। आपको मैंने जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया था ना, तो ब्लॉक डायग्राम में ऐसा लिखा था 128 बाइट रैम, और अलग से लिखा था 128 बाइट एसएफआर। तो आपका कोई पूछेगा आपका रैम कितना साइज का है 8051 में, आपको बताना है 128 बाइट का है। तो 128 बाइट में आपका स्टैक रहता है। So SP, that is a stack pointer, is of 8 bit and that will maybe initialized to point anywhere on the 128 byte of RAM. Is it clear now? Yes, sir. Okay. हाँ,
Yes, next one. What is the address range of SFRs in the 8051? Option D. Yes. हाँ, yes, yes, बराबर है. 80H to FFH. तो साइज कितना हो गया? वेरी गुड, 128 बाइट. 128 बाइट, वेरी गुड. Sixth one, the 8051 can address A, B, C, D. A says 64 kilobytes of program memory and 64 kilobytes of external data memory. B says 64 kilobytes of program memory or 64 kilobytes of external data memory. C says 4 kilobytes of program memory and 64 kilobytes of external data memory. And D says 4 kilobytes of program memory or 64 kilobytes of external data memory. Your answer? 64K, 64K. 64K can address 64 kilobyte of program D. memory and 64 and or 64 external memory 4K. 4K. Yes, answer is option. A ना. हाँ, So यस it's यस. done. ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए. अभी आपको मैंने बताया. So it can access 64 kilobytes of program memory as well as 64 kilobytes of external data memory. बराबर है ना? हम बी बोल सकते हैं क्या? No sir, because it's or I. हाँ हाँ, यस, बोलो. और बी बोल सकते हैं क्या हम? No sir. हाँ, ठीक है. मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स बताता हूँ, आपको फिल अप द ब्लैंक करना है, ठीक है. बी ऑप्शन नहीं. बी ऑप्शन नहीं, बिकॉज यूर 8051 follows dash architecture. If anyone answers, he or she will get chocolate. हाँ. Yes. One human. Can you हाँ. यस, जिसने वॉन न्यूमन बताया मुझे बताओ वॉन न्यूमन में क्या होता है, या फिर जिसने हार्वर्ड बताया मुझे बता हार्वर्ड में क्या होता है. यस, आंसर इज इधर हार्वर्ड. हाँ, यस, बोलो. Combine around at the same time in Harvard architecture. So that's why it is Harvard. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Pooja. हाँ, पूजा. पूजा. पूजा, कॉलेज स्टार्ट होने के बाद फिर मेरे से चॉकलेट ले लो, ठीक है. बिकॉज योर हार्डवर्ड आर्किटेक्चर. हार्वर्ड आर्किटेक्चर कैसा है? 8051 इधर है, इधर कुछ तो भी है, इधर कुछ तो भी है. दिस इज योर 8051. हियर यू हैव रैम, हियर यू हैव रोम, and you can access them by the address. You have a separate address bus, you have uh, you have a data bus, and you have control bus. Same thing here also. Rom data you can just read. So data bus is this, address bus is this, and control bus is this. So this architecture is called as, this architecture is called as Harvard. Harvard. Yes. So can we have the access of RAM and ROM at a time? Can I have can I have access of RAM and ROM at a time? So shall I say and, or shall I say or? Yes. I should say and. I should say and. Can you see here? And this. बराबर है? So A option is right. Next question 7. After power on, the first byte read by the 8051 is opcode, opcode or operand based on an instruction 00H. Your first byte read by the, यस, 00H. आपका जब आप जब 8051 को पावर ऑन करते हो तब आपका प्रोग्राम काउंटर विल गो टू 0000H. यस. Okay, the first byte read by the 8051 is your 00H. So D is the answer. Next, any question so far? ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर, ऐसा कुछ है?
Yes. Eighth, the best place to store rarely used variables in the 8051 is register bank, SFRs, bit addressable RAM, 30H to 7FH. The best place to store rarely used variables in the 8051 is, ठीक है, ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया, बट यू कैन से द आंसर इज सी, बिट एड्रेसेबल रैम. तो बिट एड्रेसेबल रैम में जो हम रेयरली यूज करते हैं वेरिएबल्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द बिट एड्रेसेबल रैम. ओके, व्हाट इज 30H to 7FH? जनरल पर्पस रजिस्टर. हाँ, जनरल पर्पस, वेरी गुड, जनरल पर्पस रजिस्टर. आपको अभी ये सब ऐड होना चाहिए. हाँ, बाइट एड्रेस, बिट एड्रेस की ज़रूरत नहीं, लेकिन बिट एड्रेस आपको बिट एड्रेसेबल एरिया के लिए बारे में जरा सा कुछ स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ओके. बट एस एफ आर्स कौन कौन से एड्रेस पे है, बाइट एड्रेस पे एटलीस्ट वो भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट, 8051 has 128 bits of data memory as bit addressable, 16 bytes of data memory as bit addressable, so, some of the SFRs as bit addressable, all of the above. This is also interesting. अच्छा, मुझे बताओ बिट एड्रेसेबल एरिया कितने बाइट का है? यस, 60 या 16? 16 इंटू 8, 128 आ रहा है ना? तो ए ऑप्शन जो है 128 बिट्स ऑफ डेटा मेमोरी एज बिट एड्रेसेबल, ये राइट है ना? हाँ या ना? क्या बोले? हाँ, तो इसका मतलब, हाँ, डी इज द ऑप्शन. यस, डी इज द ऑप्शन. डी इज द ऑप्शन. मैं ये बता रहा था 128 कैसे आया. आपका जो बिट एड्रेसेबल रैम है वो आपका 16 बाइट का है. उसको अच्छे से प्यार से पास से देखो, तो 16 बाइट का है. तो 16 बाइट बोले तो 16 इंटू 8, इट गिव्स यू 128. यस और नो? 128 बिट्स. सो ए ऑप्शन क्या है? 128 बिट्स ऑफ डेटा मेमोरी एज बिट एड्रेसेबल. सो दिस इज राइट. बी क्या बता रहा है? 16 बाइट्स ऑफ डेटा मेमोरी एज बिट एड्रेसेबल. तो मेरे ख्याल से ये वही बात है, एक ही बात है ना. 16 बाइट्स ऑफ डेटा मेमोरी एज बिट एड्रेसेबल. यस और नो? यस. और सम ऑफ द एस एफ आर एज बिट एड्रेसेबल. मैंने बताया था एस एफ आर के जहाँ पे एस्ट्रिक है वो बिट एड्रेसेबल है. तो कुछ एस एफ आर बिट एड्रेसेबल है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव. डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? एवरीवन, shall I proceed? Shall I proceed? Yes or no? Okay. 10th question. In the 8051, data can be stored in external code memory, internal RAM, external data memory, all of the above. Data can be stored in external code memory, internal RAM, external data memory, all of the above. So B and C both are correct. हाँ, yes, yes, yes. B and C both are correct. B and C both are correct. So all of the above should not be there. Should be B and C should be there. Okay. So हम internal RAM में भी रख सकते हैं और external data memory में भी रख सकते हैं. Data cannot be stored in the external code memory because it is read only memory. Okay. Next, in a microcontroller, the program counter always deals with program memory, data memory, stack memory, all of the above. Yes. Huh? Option? Yes, you are right. Option A. डेटा मेमोरी नहीं करता है. डेटा मेमोरी के लिए क्या है? डेटा पॉइंटर, डीपीटीआर. बराबर है, बराबर है. और स्टैक मेमोरी के लिए क्या है मेरे पास? वेरी गुड, एसपी, स्टैक पॉइंट. ओके. 12th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बीट एड्रेसेबल एसएफआर? पीएसडब्ल्यू,
PSW, accumulator, SP, none of the above. PSW, PSW है क्या बीट एड्रेसेबल? यस. एक्यूमुलेटर है क्या? है. ओके. एसपी है क्या? स्टैक पॉइंटर. डू यू वांट टू सी द फिगर? एक्यूमुलेटर क्या देखते हैं हम, एंड देन स्टैक पॉइंटर का देखते, देन वी विल बी एबल टू नो. इसलिए वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. आपका यस. एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर दिख रहा है ईओएच पे, एड्रेस बाइट एड्रेस पे एस्ट्रिक है तो बिट एड्रेसेबल है ना. पीएसडब्ल्यू बिट एड्रेसेबल है डीओएच पे, डी0एच पे. पीएसडब्ल्यू. यस. और बाकी दूसरा क्या था? तीसरा ऑप्शन क्या था? एसपी. स्टैक पॉइंटर देखो किधर है, ये देखो स्टैक पॉइंटर 81H बिट एड्रेसेबल है. नो, देर इज नो एस्ट्रिक. स्टैक पॉइंटर इज नॉट bit addressable. Okay, stack pointer is not bit addressable. Stack pointer is not bit addressable. So the answer is SP. बराबर है ना? Okay. Where is your stack pointer? Yes. So stack pointer is the answer. Next, the special function registers can be referred to by their hex addresses or by their register names. True or false? The special function registers can be referred by their hex addresses or by their register names. True or false? SFR can be referred by their hex address or by their register name. आपके स्टैक पॉइंटर जो है ये ऊपर दिख रहा है PSW, ACC, SP. So these stack special function registers are referred by their register names and not by their hex address. Hex address is there to know the location of that particular SFR. Okay, but usually referred किया जाता है register name से. It is referred by their register name, SP, accumulator, PSW, TCON, TMOD, and so forth. Okay, so answer is true. Next, the internal RAM of the 8051 is, your answer? Yes, 128 bytes. 15th, when the 8051 is reset and the EA bar pin is high, the program counter points to the first program instruction in the. Yes, this is also interesting. Give me the answer. EA bar is high. High means connected to plus VCC. बताओ. जब प्लस VCC को कनेक्ट किया हूं मैंने, so your first program instruction will point to where? इंटरनल कोड मेमोरी या फिर एक्सटर्नल कोड मेमोरी या फिर इंटरनल डेटा मेमोरी या फिर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी. यस, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग. आई वांट द आंसर फ्रॉम यू. एक्सटर्नल कोड मेमोरी. नेक्स्ट, एनीवन? एक ने बताया एक्सटर्नल कोड मेमोरी, दूसरे का आंसर बताओ. अभी एक बात तो पक्की है, पीसी बोल रहा है इसका मतलब कोड मेमोरी. कोड यहाँ पे है. आपका आंसर रहेगा बी या फिर आपका आंसर रहेगा ए. अभी वो इंटरनल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, वो ये बता रहा है. तो अगर ई ए बार इज इक्वल टू प्लस VCC है, देन इट इज इंटरनल मेमोरी. और एक्सटर्नल मेमोरी की बात आएंगी तब ई ए बार क्या होगा? ई ए बार पिन विल बी. Yes, EA bar pin will be grounded. Then you will be dealing with the external code memory. Am I right?
हाँ, क्योंकि आपका प्रोग्राम काउंटर, हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड, वो मैं बोलना भूल गया, क्योंकि आपका प्रोग्राम काउंटर जब इनिशियलाइज होता है इट पॉइंट्स टू 0000h, बराबर है। और आपका ये 00h कहाँ पे है? इंटरनल रोम में। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ। सो यस, दिस इज द आंसर। वो अच्छा, वो आपने वो भी बता दिया, बिकॉज पीसी विल पॉइंट टू द 0000h एंड 00h इज रिसाइड्स एट योर इंटरनल रोम। ओके, so we will will proceed further now. Yes, the total external data memory that can be interfaced to the 8051 is the total external data memory 64 that can be interfaced to the 8051 is 64. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Next. Next. Wait a minute. Okay. RS0 and RS1 are, your options are A, B, C, D. Tell me the right option. 3 and 4 respectively for selecting the registered and the selection. Okay. Option? D. Option D. Yes. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो आपको वो PSW का रजिस्टर देखना है, वो रजिस्टर देखना है। ओके, PSW.0, PSW.1, PSW.2, और हर एक का सिग्निफिकेंस। सो फॉर दैट योर RS0 और RS1 resides at PS3, PSW.3 and PSW.4. So D is the right answer. Okay, next. Which of the following SFR is bit addressable? Bit addressable. तो ठीक है, for that also you will have to see the table and from that you will be able to understand. Okay, SP is not bit addressable, बाकी का you need to just check out. Okay, Tcon is answer. Okay, Tcon is the answer. हाँ, बाकी सब है बिट एड्रेसेबल नहीं है, बराबर है। SP, SBUF and DPL, they are not bit addressable. Good. Next, the 8051 has ABCD. Tell me the right answer. 4 banks of 8 Option? C. Option C. 8 banks of 4 register. Wrong. Most of 4 banks of 8 registered. हाँ, बराबर है ना, 4 बैंक्स है ना वहाँ पे, और हर एक बैंक में 8 रजिस्टर है। तो आपने सी, यू आर इन कंफ्यूजन। ओके, सो देर आर 4 बैंक्स, ईच बैंक ऑफ 8 रजिस्टर। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट। Which of the following SFRs of the 8051 is not bit addressable? ठीक है, you can find them. 21st, 21, the 8051 has dash on chip program memory. On chip program memory कितने साइज की है? 4K। हाँ, 4K, वेरी गुड। द स्टैक ऑपरेशंस इन द 8051 आर, यस, ये बताओ, ABCD ऑप्शन बताओ। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यस, राइट, A इज द ऑप्शन। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, बराबर है, लिफो। Yes, the maximum size of the stack in the 8051 can be. This is also interesting. This is also interesting. The maximum size of the stack in the 8051 can be. मैंने बताया ये। No one? Yes, 128 बाइट पूरा का पूरा इंटरनल रैम स्टैक बन हम कर सकते। ओके, द मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम बोला उन्होंने, सो मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक कैन बी 128 बाइट, पूरा का पूरा इंटरनल रैम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिन ऑफ द 80, ठीक है, मैंने पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिया है। सिलेक्ट एक्सटर्नल, बट यू कैन गिव मी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पिन ऑफ 8051 इज यूज्ड टू सिलेक्ट एक्सटर्नल कोड मेमोरी? बताओ। पिन
8051 का कौन सा पिन है जो हम यूज करते हैं एक्सटर्नल टू सिलेक्ट योर एक्सटर्नल कोड मेमोरी? ये बात ये बार बराबर है ना? दैट इज राइट, कोड मेमोरी, एक्सटर्नल कोड मेमोरी. वेट वेट, ये बार अगर आपका ग्राउंड है तो यू आर सिलेक्टिंग द एक्सटर्नल रॉम या फिर एक्सटर्नल रैम. हाँ, एक्सटर्नल रॉम. सो यस, सो ई ए बार इज द राइट आंसर. ई ए बार इज द राइट आंसर. So LSB of byte address 21H has a beat address. हाँ, ये बताओ मुझे. What is LSB? What is LSB? What do you mean by LSB? हाँ, least significant bit. So least significant bit of byte address 21H has a beat address. This is very interesting. Okay, ये ऑप्शन ध्यान में रखो. I will take you to the figure and you will have to give me the answer. Again, I am repeating the question. You have to remember the options and you will give me the answer. The question says least significant bit of byte address 21H has a bit address dash. Now see the figure now. Let's see the figure. Tell me the answer. 08H. Very good. Very good. Very good. 08H. Can you see your byte address 21H? Can you see the LSB, least significant bit? So can I say bit address is 08H? Sorry, don't say 08H. It is 08. Yes or no? Yes. And if I ask you, tell me the uh, MSB bit address. 0H. Yes, it is. Yes, it is 0FH. Very good. Very good. So you have understood the concept of bit address and byte address. Okay. I think we can stop for today. In the next lecture, we will be talking about the pin configuration. We have to understand 40 pins of 805. ओके, तो हर एक पिन का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, हर एक पिन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप फॉर टुडे. अटेंडेंस हो गया क्या? नितिन सर नहीं आए? ओके, Manpreet, you can take the attendance then. Roll number 1, 3, Present. 4, present, 5, present, 6, Present. 7, present, 9, present, 10, Present. 11,